So firstly, before going into the detail, before giving any sample question or teaching you anything more, I will start with the lexical resources. Lexical resources for writing task 1. Many wonderful lexical resources are available on net anywhere. So we will start with the introduction. Okay, if you want to write introduction, what all words are there that you can use for your introduction that will help you score good band score? So first is gives information about or on. So videos of this is also available on my shorts videos. I have put a different, like, this is in the video, this is included in this whole lecture series. But if you want to revise just the part where you have to learn the lexical resources, then there's a short available, actually many shorts available on my channel, where you can just scroll it and learn it, and that way you'll be able to retain the information. And that was put on or uploaded for that purpose only, that I wanted everyone to just scroll, and how we watch reels now, that way only you can learn the content. So for introduction in lexical resources, पहला आता है introduction में कि it gives information about or on, it provides information about or on, it shows, it illustrates, it depicts, it represents, it demonstrates, it compares. So इसको line में कैसे use कर सकते हैं कि the bar graph shown below, no don't write shown below, but the bar graph you can write the word compares. अगर और compare word का usage कब आना चाहिए? Only if there are several items to compare. Okay, जैसे कि वो trend बता रहा है कि student from class 7th 8th 9th 10th are interested in what all sports, so it compares activities of different grades. Okay, so only if, or the bar graph demonstrates, the bar graph demonstrates the various activities performed by the students of different grades, or the bar graph represents the various activities performed by 6th graders, 2nd graders, or the bar graph depicts the activities performed by middle schoolers, or the bar graph illustrates, or the bar graph shows, the graph gives information about or on, or provides information about or on. So these are the vocabulary that you can use to start your introduction. Next is overview. Next क्या आता है? अगर आपको overview लिखना है, so what kind of vocabulary you will be using for writing overview? The first is to show an upward trend. Okay, if you are seeing an upward trend, what all vocabulary you can write? So upward trend means, obviously I hope you understand what upward trend actually means. So uske liye you can use a growth was observed, or growth in general was observed, a rise was observed, okay, a climb was observed, or an increase was observed. Okay, an increase was observed. Or you can write very nice word, that is an upsurge was observed. Okay, upsurge, or upsurging trend. Okay, or upswing was observed. So these are the words that you can use to write an upward trend. So from the year 2002 and 2010, in between year 2002 and 10, there was an upsurge observed in the number of people voting, or there was a rise in the female voters since 2012. Like that, you have many words for downward trend as well. Okay, downward trend कैसे कैसे use कर सकते हैं words हम? So there is decrease in number of people who have, decrease in the number of people who have been using phones before or after a particular incident. Like I'm giving an example. There was a drop observed, a fall was observed in the year 2012, or a decline in the number of COVID-19 patients was observed in the year 2023 or 22. A downturn was observed, a slump was observed, a deflation, downslide, dip, deterioration, decrement. And I really personally like this word plummet. So the graph plummeted in the year, or the graph plunged in the year so and so. For more words that you can use is that fluctuation was observed since
Okay, a fluctuation was observed from the year 2010 to 12. A dip was observed. It remained steady, constant, or unchanged in the years so and so. Or the number of people visiting the parks remain stable or remain unstable, level off, reach a peak of, maintain, slump. Okay, slump means a severe or prolonged fall. So a slump was observed in the number of people taking offline classes in 2021. A variation was observed. Now, if you want to write something related to time, expression, or verbs, so you can say over the next 5 years, over the period of 10 years, the trend was pretty drastic. The next 10 years show a plummeted growth, or the next 10 years show a stable growth. In the following years, the people visiting malls started to increase. The beginning of the period, the end of the period, the first year, the last or final year. So this is too, if you want to, like you want something to be expressed in terms of time. फिर आते हैं adverbs. So adverb is something that defines or describes the verb. So steadily, rapidly, gradually, dramatically, sharply, significantly, steeply, considerably. So there was a dramatic change observed in the year so and so, or there was a rapid change. Considerably, the changes among so and so were not much. There was a steep, sharp increase in the salary of people in so and so sector. So these are the synonyms: ki sharply, quickly, rapidly, steeply, considerably, significantly, substantially, steadily, gradually, moderately, and slightly or slowly. So these are all the lexical resources which you can use in order to understand, in order to writing task 1. Some of them can also be used in writing task 2, but this is more precisely for writing task 1. So it starts from introduction. Okay, this is all for introduction, these 8. Okay, you can add in as much as you want, but this is something that will help you a lot. Then there is overview for upward trend, for downward trend. There are more overviews for time expression, for adverbs as well. We will solve a sample question, which is this one, and we will try and understand how to write introduction or overview or body para 1 and all these things. So I have given you the lexical resources especially for introduction. Here it is, and we can use all these lexical resources. If you want, you can screenshot the given slide, and then we can move forward to writing our own introduction. Now I will give you a time of, okay, let's quiz now. How much time do you think is given for writing introduction, or how much time you should spend more precisely to write introduction? Okay, comment down below. Is it 2 minutes, is it 3 minutes, or is it 5 minutes? Correct answer will always get a thumbs up. Now look at the diagram. Okay, I will not give you exactly 1 minute because the length of the video will increase, but you can honestly pause for, I'm gonna give you 3 minutes since it will be your first introduction. Pause the video and try to write a introduction in your own language. It could be a good introduction, it could be a bad introduction, but just try is what my main motive is. So please, if you want, you can pause. So this is the introduction. Using the lexical resources used above, I can write that the graph illustrates various trends the graph illustrates various trends in the buying habits concerning music, which is measured in percentage between the years
2011 and 18, or 2011 to 18, it presents, or it represents three different methods. Firstly, streaming, comma, downloading, comma, buying CDs. Buying CDs. So this is the introduction. Okay. The graph illustrates, graph क्या illustrate कर रहा है, various trends in the buying habits concerning music industry, sorry, music, which is measured in percentage between the year 2012 to 18. It represents three different methods of streaming music, that is streaming, downloading and buying. As you can see, streams, downloads and CD purchase, and this is the year and it is measured in percentage. Now the question was, to compare and contrast the different styles of streaming music in so and so population or in so and so year. अब इसमें क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स है, तो हमने ऊपर का लेक्सिकल रिसोर्स यूज करके लिखा कि द ग्राफ इलिस्ट्रेट्स, ओके, क्या इलिस्ट्रेट कर रहा है वो, वेरियस ट्रेंड्स इन बाइंग हैबिट्स कंसर्निंग म्यूजिक विच इज मेजर्ड इन परसेंटेज. ठीक है, तो यहाँ पे पहला लर्निंग पॉइंट है कि हमने इनिशियली तो पैराफ्रेज किया क्वेश्चन. ओके, हमने अच्छा लेक्सिकल रिसोर्स यूज किया टू इंट्रोड्यूस माय सेंटेंस. ओके, अब इसको टाइप करने में कितना ही टाइम जाएगा आपका, हार्डली 2 मिनट्स. और वेरियस ट्रेंड्स क्या है, इन द बाइंग हैबिट्स कंसर्निंग म्यूजिक. ठीक है, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट म्यूजिक सेल्स बाय मेथड, सो यू कैन नॉट राइट, you cannot use these words, percentage of total music sales by method. So we have written buying habits concerning music which is measured in percentage. So you always need to write, always mention the unit. If the unit is mentioned in the graph, sometimes it may not be, but you always have to mention the unit, it will fetch you extra marks. Then between the year 2011 to 12, that timeline also you have mentioned. And obviously introduction में आपने बता दिया कि there are three different now sales का methods present है, तो three different ways, that is streaming, downloads and CD purchased. So few other tricks and tips that you can continue is that, you know, as mentioned above, that paraphrase the question, do not copy it, and what does the diagram show, do not describe the results yet. So many people make mistake of continuing with all the details, so you should stop there and begin with next para. So now it also depends on type of chart, like other things to be noted down in introduction or while introducing is, first is type of charts. Type of charts, so would like words like given below shouldn't be mentioned, because it's our habit when we write answers in our question paper as well, that we write the words like given below shouldn't be mentioned, like the graph given below. So graph given below or anything like that, or the pie chart given below illustrates, so words like this shouldn't be mentioned. This is wrong, entirely wrong practice. Don't write this given below word here, graph illustrate or something like that. So that's why the trick is there to write be direct. All right, then sometimes type is not given, so mention in answer. So what happens is, most of the time the type of chart is not mentioned. So in that case you should be able to write the type of chart, whether it's a bar graph or a line graph or a pie chart, or other type of charts are also present there. Then unit should be mentioned. Other trick is that unit should be mentioned. If you are not writing the unit, then negative marks are given. Unit is measured in millions or unit is measured in introduction. Then you have to write and go through all the lexical resources available for the introduction. The graph depicts, illustrate, okay, provides information, compares if there is different information, demonstrate. Now one most important thing is that when people write the answer, how do they write? Let me show you that. For example, so
This is a sample answer one of the students wrote. Is the graphs compares the various professionals working in the field of healthcare financial industry from New Zealand and Sweden for 2 years, that is 2000 2005. Now what I want you is to take a screenshot, or you take 1 minute to identify what did they wrote wrong in this answer, what they should have written correctly. Okay, there is a mistake in this. So the thing is that you can pause the video and identify if you want, or you can go back. Acha, one more thing, you guys can turn on the captions if you want it is present, like in the this side of the video. Like if this is your screen, then CC करके एक symbol present रहेगा, and that is where it is mentioned. So the pie graph compares the various professionals working in the field of healthcare. So first of all, the mistake that they made is there is no such thing as graphs. Okay, if one graph is given to you, you have to write that graph in singular form. And there is no such thing as compares. You can't use such tenses. So a simple trick to do this is copy the tense used in the question. Okay, copy the tense used in question. Don't try to be don't try, like this is something we as Indian make mistake while speaking, but don't carry forward that mistake in writing as well. You can attend grammar classes if you want. You can comment down below, so I'll start teaching you tenses as well. But don't write the graphs compares. No, the graph compare the various professional, because you know this is to be written as per the question. Okay, this is a simple trick, basically what I want to tell. I'm not going to get into details. So the next part comes is overview. Okay, now we will be discussing the overview. So जो हमारा ग्राफ है क्वेश्चन का, दैट इज दिस. अब मुझे इसके ऊपर एक ओवरव्यू बनाना है. ओवरव्यू के बारे में हम काफ़ी लेंथ में पढ़ चुके हैं. तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी दी ओवरव्यू, गिवन दैट कि आपको लेक्सिकल रिसोर्सेज भी पता है. तो ओवरव्यू का फर्स्ट रूल होता है दैट इट स्टार्ट्स विद ओवरऑल, द वर्ड ओवरऑल. सो दिस इज योर ग्राफ. आई एम गोइंग टू राइट द ओवरव्यू हेयर इटसेल्फ, सो दैट हमें बार बार ऊपर नीचे नहीं आना होगा. तो ओवरऑल, ओके, लेट मी राइट इट इन लिटिल बिट स्मॉलर टोन. Yes, overall, this is what you have to mention before writing overview. Overall, the graph, or acha chalo, I'll not tell you the answer. What you think you can write, pause the video, because I'm not going to wait for another 3 or 4 minutes. So ideal time, the question comes here. What is the ideal time you should spend in writing overview? Is it 2 minutes, 3 minutes, or 4 minutes? You have to comment down below your answer, and the correct answer would get like from me. And yeah, let's move on. So it's your first time writing overview. Again, I'm going to give you 1 minute extra, so you can write for 4 minutes. I'm giving you the time to brainstorm and write the overview, but I'm not going to wait for 4 minutes. You can pause the video and then you can unpause it whenever you're ready to compare your answer. Okay, now overview में हम क्या क्या बात करने वाले हैं. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ओवरऑल क्या, लाइक इन जनरल सेंस समटाइम्स वी से कि ओवरऑल क्या पढ़ाई हुई वहाँ पे, है ना, ओवरऑल कैसा रहा फंक्शन, लाइक ओवरव्यू बताना है आपको. आपको डिटेल्स, इसका मतलब ही क्या होता है, आपको डिटेल्स नहीं बतानी, आपको जिस बतानी है समरी बतानी है. एक तरह से आपको यू हैव टू डिफाइन दैट प्रोग्राम टू अ पर्सन विदाउट टेलिंग द डिटेल्स. तो आप क्या बताओगे इस केसेस में. अगर मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा ओवरऑल शादी कैसी रही, सो यू हैव टू टेल द हाईलाइट्स दैट ओ द एंट्रेंस वाज लाइक दैट, और यू नो व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ ट्रैजिक इंसिडेंट विद द ब्राइड दैट her hairstyle fell off at the very last moment, or one good thing happened was the bride and groom were madly in love with each other. So something like that overall बताना. So इस graph में what you can see is the overall कि overall मैंने जो देखा कि 2000, मैं इस पॉइंट से बात करूँ तो, ये वाले पॉइंट से बात करूँ तो, दैट इज आई थिंक आफ्टर 2014 बोथ CD परचेज जो हुई और डाउनलोड्स जो हुई उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है. और स्ट्रीम्स आफ्टर 2014 the ways by which music sales showed an upward trend is by streaming the music. Okay, can form the sentence. मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ. सो अभी हमें इस डेटा की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है. ओवरव्यू में यू डोंट टॉक अबाउट द डिटेल्स, यू डोंट टॉक अबाउट द डेटा. ओके, यू कांट से दैट यू नो कि 30 था 40 था. दिस इज बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 में तो फिर ये मस्ट हो जाता है लिखना, बट नॉट इन ओवरव्यू एट ऑल. सो ठीक है, तो एक ट्रेंड तो मैंने ये देख लिया. फिर एक ट्रेंड मैंने ये देख लिया कि वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, एक अपवर्ड ट्रेंड है. ओके, अब एक और ड्रास्टिक चेंज हम देख सकते हैं कि CD परचेज इन द ईयर 2011 में देखो और यहीं 2014 में देखो, तो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है इसके फॉल में. सो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉल.
सो दिस इज हाउ ओवरऑल यू कैन राइट. तो मैं लिखूंगी ओवरऑल बोथ डाउनलोड्स, ठीक है, बोथ डाउनलोड्स एंड physical sales of music had steadily declined, ठीक है, had steadily declined. तो if you want you can mention the year, if you don't want you cannot. Downloads and CD purchase, physical sales को उन्होंने CD purchase को उन्होंने paraphrase किया physical sale में, has steadily declines and the latter depicts a falling trend after 2011, while the downturn for the former began in 2014. However, there has been a sharp rise, or you can use the word upsurge, in people streaming music since 2013. तो अब इसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट लर्निंग पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड इंक्रीजिंग अ बैंड स्कोर. तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग के दौरान पढ़ा था कि पहली चीज़ हमने पढ़ी थी अबाउट लेक्सिकल रिसोर्सेज, समथिंग नोन एज लेक्सिकल रिसोर्सेज, अगर आपको अच्छा बैंड स्कोर चाहिए उसमें. और दूसरा हमने पढ़ा था लिंकर्स के बारे में, अंडर कोहेरेंस एंड कोहेशन इफ यू वांट गुड सोर्स. तो दोनों ही केसेस में वी सेड और वी रेड दैट वी नीड 15 to 20 बैंड वर्ड्स और बैंड 9 वर्ड्स. अच्छा, टू बी एग्जैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, हमने उसके लिए एक ट्रिक भी पढ़ी थी कि 3 के मल्टीपल में दे वर कमिंग, दैट वाज अबाउट लेक्सिकल रिसोर्स आई गेस, बट स्टिल हम एक बार और पढ़ लेंगे उसे. तो या ओके, तो 6 to 7 linkers in task 1 and 6 to 7 band 9 words in task 2. So I'm going to write 7 here and 7 here. तो हमें 7 band 9 words चाहिए और 7 linkers चाहिए, जिसमें कि ओवरव्यू में आपके मेनली लिंकर्स हो जाएंगे और प्लस band 9 words you can write. तो ओवरऑल, ठीक है, ये वाला वर्डिंग मैंडेटरी है. ओवरऑल वर्ड आपको मेंशन करना ही करना है व्हाइल राइटिंग ओवरव्यू, एंड उसके साथ ये कॉमा प्रेजेंट होना चाहिए. देन बोथ डाउनलोड्स एंड फिजिकल सेल्स ऑफ म्यूजिक हैड स्टेडीली डिक्लाइन. ये लाइन हमने कहाँ पढ़ी है, लेक्सिकल रिसोर्स में, ठीक है, लेक्सिकल रिसोर्स में. हाउ टू, यहाँ पे देख ही लेते हैं हम, हाउ टू एड्रेस अ डाउनवर्ड ट्रेंड, डिक्लाइन, ठीक है, स्टेडीली डिक्लाइन. अब आता है नेक्स्ट, द लैटर डिपेक्ट्स. अब ये भी एक अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का एंड शो योर कमांड ऑन लैंग्वेज कि लैटर इंस्टेड ऑफ सेइंग फिजिकल सेल्स और CD सेल्स over and over again, you can say कि latter depicts a falling trend after 2011. So this is the database thing. So हम अभी language wise देख रहे हैं. While, तो ये क्या आ गया, linker, ये भी हम पढ़ चुके हैं. Linkers अच्छा नहीं पढ़ा, linkers will study, okay, don't worry. While the downturn, okay, this is again a band 9 word. For the former, good use of language began in 2012. However, तो linkers कितने हो गए, दूसरा linker however, again comma आ गया. There has been a sharp rise, band 9 word or lexical resources or upsurge in people streaming music since 2012. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे linkers की, तो कितने, आई थिंक 2+ linkers करें हमने यूज, 2 एटलीस्ट वी हैव यूज. एंड band 9 words और lexical resources की बात करूँ तो we have used how many, 1 2 3 4, at least 4, okay, there would be more than 4+. So that is how you form an overview, okay, understand the language. and अब क्या है कि ये तो लैंग्वेज पार्ट हो गया, ये हमें पता था कि ओवरव्यू हम ओवरऑल से स्टार्ट करते हैं, गुड. हमें पता था कि हमें ये लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो उसके लिए भी गुड, पॉजिटिव पॉइंट्स. हमें पता है कि हमें स्मार्ट लैंग्वेज यूज करनी है विदाउट पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन, विद पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपको प्लस पॉइंट्स, कूडोस. फिर हमें पता है हमें लिंकर्स भी यूज करने हैं, हमने लिंकर्स भी यूज करे, कूडोस.
बट ये तो पार्ट हुआ लैंग्वेज का, बट आप इसको अपने आंसर के साथ कैसे बांधोगे, बिकॉज देयर पॉइंट्स टू राइट कोहेरेंस के अंडर भी आपके पॉइंट्स काउंट होंगे. सो नॉट ओनली जस्ट लैंग्वेज वुड स्मार्ट लैंग्वेज. ओवरव्यू में आपको डेटा नहीं बताना है. ओवरव्यू को आपको मैक्सिमम 3 लाइन में फिनिश करना है. ओवरव्यू के लिए आपके पास 3 मिनट रहेंगे. ठीक है, तो ओवरव्यू में आपको खिचड़ी नहीं मचानी, हैव टू बी एज स्मार्ट एज पॉसिबल. तो अब हम कंपेयर करेंगे कि हमने क्या लिखा और क्या प्रेजेंट था डेटा में. सो ओवरऑल both downloads and physical cell. So downloads of physical cell had steadily declined. Okay, had steadily declined. तो हमें दिख रहा है कि steadily decline हुई है. The latter depicts a falling trend after 2011. So physical cell का एक falling trend ही दिख रहा है मुझे after 2011. While the downturn for the former, अब former क्या है, downloads, began in the year 2014. Correct. Okay. However, there has been a sharp rise or upsurge. अब यहाँ पे बात करें streams की, तो एकदम से बढ़ोतरी आई streams में since the year. However, there has been a sharp uprise in people streaming music since 2013. 2013 से कंटिन्यूसली आपका जो ग्राफ है वो जैसे यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट है 0 to 10, यहाँ पे होगा मे बी 5, 6, 7 एंड देन इट हैज स्टार्टेड टू राइज 9 एंड इट हैज देन क्रॉस 10, 11. सो आपको यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए, सो यू डोंट हैव टू राइट वैल्यूज. जैसे नीचे बॉडी पैरा में पूछेंगे तो देन यू कैन राइट, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. So this is how smartly you deal with an answer, how smartly you can paraphrase the question. ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ देख के तो हमें समझ आ ही रहा है. अब नेक्स्ट पार्ट आता है, थोड़ा सा इसे साफ कर दिया जाए, ग्राफ ही नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी पैरा का. ओवरव्यू में कुछ लर्निंग पॉइंट्स है हमारे पास क्या, तो ओवरव्यू कैन बी रिटन इन पैरा 2 एज वेल एज इन लास्ट पैराग्राफ. मेजर ट्रेंड्स जो हैं वो आपको 2-3 सेंटेंसेज में बताने हैं, तो हमने 2-3 सेंटेंसेज में ही मेजर ट्रेंड्स बताए हैं. तो we have to compare and write about the trends. Okay, and past, present, any tense can be used, but make sure whatever tense you are using should be consistent throughout. It's not that कि आप यहाँ पे past tense use कर लिया, next जगह present tense use कर रहे हो. Okay, अगर आपके पास multiple bar graph आता है, there will be situations where दिस इज वन ग्राफ प्रेजेंट जिसमें आपको अलग अलग 3 डेटा होगा, फिर एक और ग्राफ प्रेजेंट रहेगा अलग अलग 3 डेटा, एंड देन देयर बी थर्ड ग्राफ जिसमें अलग अलग 3 डेटा प्रेजेंट रहेगा. इन सच केसेस वेयर देयर इज मल्टीपल बार ग्राफ्स, use similar trend whichever is highest, whereas then write the lowest trend either on, like ऐसे words use करके जैसे highest trends, तो हम एक common point पकड़ के easy हो जाती है language, और lowest trend common point पकड़ के easy हो जाती है language. That is what you need to do. मतलब overall क्या है, you have to play smartly because आपके पास इतने सारा टाइम नहीं है. लेक्सिकल रिसोर्सेज को रिवाइज करते रहो हमेशा. ओवरव्यू में एटलीस्ट आपका एक लेक्सिकल रिसोर्स होना चाहिए. दिस इज अ गुड पॉइंट एंड आई वांट यू टू रिपीट इट, प्ले बैक, कि ओवरव्यू की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरव्यू, एटलीस्ट एक लेक्सिकल रिसोर्स, सॉरी एक लेक्सिकल रिसोर्स प्रेजेंट रहना चाहिए उसमें. तो बॉडी पैराग्राफ पे हम आएंगे नेक्स्ट में. लेट्स लुक एट नाउ हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स. ओके, और एक और ट्रिक है, एक और टिप है जो ओवरव्यू और बॉडी पैराग्राफ दोनों के लिए मेन काम में आएगी, कि इफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन टू राइट अबाउट द मेन फीचर्स, क्वेश्चन में कहा है राइट अबाउट द मेन फीचर्स, एंड यू हैव स्टार्टेड टू राइट इवन ऑल माइन्यूट डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स यू हैव स्टार्टेड टू राइट, देन योर मार्क्स विल बी लॉस्ट अंडर टास्क अचीवमेंट. कि आपको टास्क उन्होंने दिया था कि आपको कम में लिखना है, मेन इवेंट्स लिखना है, क्योंकि उनको भी पता होगा कि वो ग्राफ काफी लेंदी है, और आपने मेन फीचर ना लिख के या लिखा भी उसके साथ साथ और डिटेल्स भी डाल दी, माइन्यूट डिटेल्स भी डाल दी, देन you are going to lose marks under task achievement. So select and write only main trends. Comparison should also be made और data values भी होनी चाहिए, but this is all about body paragraph 1. So first we should understand what to do in body paragraph 1. Body paragraph 1 yeah and 3. So that is basically आपका para 3 क्या होगा, it will be body para 1. अब हमने structure के according पढ़ा था कि mainly 3 sentences यहाँ पे present रहेंगे. Firstly you have to talk about some major trend, minor, and then next one also minor. ऐसे ज़रूरी नहीं है, but still you need to follow a kind of structure, ताकि जब आप end moment पे बैठे you should not have a panicky situation in your mind. You should be well versed with the process of it. So body paragraph 1 के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि यू हैव टू राइट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे बच्चे हबड़ तबड़ में मिस आउट कर जाते हैं, दैट राइट द डेटा या फिर वैल्यूज जिसे हम कहते हैं मस्ट बी देयर. विदाउट दिस यू विल लूज ऑल द मार्क्स. एंड राइट अप्रॉक्स वैल्यू. ओके, जहां पे भी आपको पता है कि ये डेफिनेटिव वैल्यू नहीं है, ऑलवेज मेंशन अप्रॉक्स वैल्यू, और क्या होगा, और एल्स योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. So make sure of that.
and yeah, so you have to select and write the main trends. Comparison should also be made. So major changes and क्या लिखना है हमें मेनली, मेजर चेंजेस क्या हैं, ठीक है, whilst comparing it, and we have to write the values, और जो वैल्यूज गिवन नहीं है या क्लियर नहीं है उनके लिए अप्रॉक्स, एंड वी हैव टू मेक कंपेरिजन्स ऑल थ्रू आउट द वे. हर क्वेश्चन में कंपेरिजन वाला पॉइंट तो आता ही है. तो अब क्वेश्चन आता है कि बॉडी पैरा कैसे लिखा जाए. ठीक है, दैट इज वाई मैंने यहाँ से सारे वर्ड्स और लाइन्स हटा दिए थे, ताकि ये हमारा, ये देखो, ये एक्चुअल क्वेश्चन रहा ग्राफ का. अब बॉडी पैरा कैसे लिखे, क्योंकि मेरे पास तो इतने ईयर्स का भी डेटा है, ये वैल्यूज भी इतनी सारी है, और 3 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देना है. तो इसमें 2 चीज़ें होंगी. ठीक है, या तो मैं ग्राफ को ऐसे डिवाइड कर लूँगी लाइक दिस, कि 2 चीज़ें एक पैराग्राफ में डिस्कस करूँ. ठीक है, या फिर जैसे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या होता है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या हो रहा है कि 2 चीज़ों का, जो कि हम ओवरव्यू में भी मेंशन कर चुके हैं, 2 चीज़ों का ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड है. जैसे स्ट्रीम्स और डाउनलोड्स का डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है और सीडीज का अपवर्ड ट्रेंड है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, तो या फिर इसके बाद क्या लिख सकती हूँ कि जैसे मान लो मैंने पकड़ लिया ये ईयर 2013-14 का, तो आई कैन डिवाइड द ग्राफ लाइक दिस, कि मैं बॉडी पैरा 1 में इधर आई राइट अबाउट द ईयर 2011 to 13, कीपिंग, मतलब मेरा जो कॉमन पॉइंट होगा वो ये होगा, और वेरिएबल्स क्या होंगे, स्ट्रीम, डाउनलोड, सीडी परचेज. और बॉडी पैरा 2 में मैं लिखूंगी फ्रॉम ईयर 2014 till 18, जो कि कॉमन ट्रेंड दिख रहा है. तो कॉन्स्टेंट ये ईयर्स रहेंगे, जो भी चेंज होगा लैंग्वेज में वो इनके प्रति रिलेटेड चेंज होगा. या दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कि आई राइट अबाउट दिस कॉमन ट्रेंड्स किस किस में ऑब्जर्व है. तो मेरे जो कॉमन पॉइंट्स रहेंगे वो रहेगा सीडी परचेज और स्ट्रीम्स एंड डाउनलोड्स. आई कैन राइट अबाउट स्ट्रीम्स एंड डाउनलोड्स इन बॉडी पैरा 1 एंड सीडी परचेज इन बॉडी पैरा 2. और मेरे जो वेरिएबल्स रहेंगे वो एज पर द ईयर द डेटा वाज दिस, एज पर दिस ईयर द डेटा वाज दिस. सो उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये वाली वैल्यूज जो है वेरिएबल्स रहेगी. हाउएवर स्ट्रीम्स, डाउनलोड, दीज वर्ड्स विल बी कांस्टेंट. तो यू कैन डिवाइड द ग्राफ इन एनी विच एवर वे यू वांट. ये आपको तब करना है जब आपको इनिशियली आप क्वेश्चन देखेंगे और आपके पास 3 मिनट का टाइम रहेगा टू ब्रेनस्टॉर्म द आइडिया, टू राइट. आपके दिमाग में वो बन जाएगा कि आपको कैसे लिखना है. ठीक है, तो अब हम साथ में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि मैं स्मार्टली, मुझे क्या है कि ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं छापना, मुझे बस अपनी लैंग्वेज पे कमांड शो करनी है, मुझे लेक्सिकल रिसोर्सेज लिखने हैं, लिंकर्स लिखने हैं, और मुझे अपना काम खत्म करना है वेरी स्मार्टली. तो मैं ऐसे में क्या पकड़ूं ट्रेंड कि मुझे कम से कम लिखना पड़े, पर इतना कम भी नहीं मेरे 150 वर्ड्स के नीचे चला जाए, नहीं तो फिर तो गई बहस पानी में. It is an English paper and I'm speaking everything in Hindi because I want you to know my emotions at a very raw level. So स्ट्रीम्स और डाउनलोड्स है, सीडी परचेज है. ठीक है, हम इतना ब्रेनस्टॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्ट से सोच रही हूँ अब, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैसे स्मार्टली डील करना है. तो आप कैसे ब्रेनस्टॉर्म करोगे इसमें आप, कि यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग फ्यू 1 or 2 सेंटेंसेस. कि सपोज आई एम राइटिंग बॉडी पैरा 1, तो अगर मैं इसको लिखूँ कि एज पर द ग्राफ डाउनलोड्स एंड स्ट्रीम्स, डाउनलोड्स एंड सीडी परचेज. ओके, देखो यहाँ मैंने गलती कर दी ना, कॉमन ट्रेंड इस पे ऑब्जर्व हो रहा है. कॉमन ट्रेंड किस पे ऑब्जर्व हो रहा है, डाउनलोड्स और सीडी परचेज में. स्ट्रीम्स में तो हायर ट्रेंड ही है. ओके, एज पर द ग्राफ. अब यहाँ पे वर्ड लिखा है मेथड. काय का मेथड, म्यूजिक सेल्स का मेथड. तो मैं मेथड वर्ड तो बिल्कुल यूज नहीं करूंगी और ना करना चाहिए, यू हैव टू पैराफ्रेज इट. तो मेथड्स के लिए क्या क्या वर्ड यूज सकते हैं पैराफ्रेज के लिए, मेथड, प्रोसेस, ठीक है, वेज, और क्या यूज हो सकता है, मीन्स. अगर मैं इफ आई एम कस्टमाइजिंग द सिनोनिम एज पर द क्वेश्चन, और मोड्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट. सो मैं कह सकती हूँ द मीन्स अब म्यूजिक सेल्स है, तो परचेज आई कैन राइट सेल परचेज. आई कैन फॉर्म अ सेंटेंस की एज पर द ग्राफ the means by most people started to purchase music was streaming, which showed a boom or a massive or a drastic upsurge since the year 2013, which was approximately 10%, and it reached up to what, approximately 40% by the year 2018. So ऐसा करके मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में स्ट्रीम्स. however नेक्स्ट हम आ सकते हैं बॉडी पैरा. Next we can come to body para 2. However, on the other hand, the methods हम यूज नहीं कर सकते. The ways, the various ways of
On the other hand, downloads and CD purchase saw a downwards trend since the year 2011 and 14 respectively, reaching from 60%, approximately 58%, to approximately 25% in the year 2080. ऐसे करके rough idea I'm giving that you can write the body paragraphs. So this is basically brainstorming ideas. Now आपके पास language है, lexical resources है, linkers है, ideas है. So एक smart language जो put up करोगे आप, that all comes with experience and experience only. The more you write, the more you'll understand. तो इसके लिए कुछ अच्छे lexical resources है for writing body paragraphs as well. So we'll go through that first. Okay. So to write it, the lexical resources is according to the graph, according to the pie chart, according to this or that. Looking at the graph, or looking at the pie chart, or looking at the line graph, or looking at the bar graph, the dash shows a clear trend, or whatever trend you want to write. It appears the dash, okay, the dash outlines, the graph outlines a clear downward trend or upward trend, or a clear upsurge in, or clear slump in. All these words you can write. So ये हुआ sentence 4 में, like you can write according to, okay, the figure falls, jumps, decline. The figure falls, jumps, or declines slightly to plateaus at, grows moderately to, spikes at, dips to, swells to, shrines to, bottoms at. Okay. और अब आप कुछ linkers that you can write is furthermore, additionally. अभी तो बहुत सारे linkers पढ़ने हैं आपको. Moreover, simultaneously, at the same time, although, though, however. Okay. XYZ contrast, ABC, this information contrast that information. All these words you can write. अब कुछ आता है smart vocabulary. ठीक है. Smart vocabulary का भी you can write and learn. So this is the vocabulary. So it highlights, it depicts, it illustrates, it is cited, attributed in the pie chart, it is considered or regarded or is recorded, a number of or various, poor performance, outcome or results, effects or effects. Okay, दोनों को एक ही जैसे लिख दिया इन्होंने, देखो, effects or effects. There is a dearth of, scarcity of, अरे scarcity of, scarce in a, scarce, and this is inadequate. Okay, this is scarce, scarce, it is wrong है. This is scarce and inadequate. फिर आता है a small number or amount of, a small number or amount of, significant proportion of, a significant percentage of, a majority, a very large majority of. So this is how you can write the, you can write the smart vocabulary or use the smart vocabulary. Okay. फिर नेक्स्ट आता है वर्ड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, कि आपको अप्रॉक्सीमेटली कांट यूज द वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन. आप एक शब्द भी 2 बार यूज करोगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. यू कैन राइट अराउंड, ओके, अप्रॉक्सीमेटली, प्रिसाइसली, or you can write exactly. The percentage was close to 50, slightly above this, just under 40 people were, or just under 50 people, slightly
below or above, well under. So the tip is to choose the word wisely. Do not repeat the word. Okay? But ऐसा ना हो कि you don't want to repeat it and you're using the wrong terms over and over again.